So we are here to discuss about accessibility on social media. And as we all know, I'm sorry, as we don't all know, and a few people know that we are doing this project under Meta, and we are doing this campaign called Leveraging Social Media Accessibility for All. Right? In this campaign, our target is to make every social media post accessible to everyone. It's not about only sighted people. It's about making those posts accessible to everyone. So we are here to discuss few pointers about how to make social media posts accessible, and maybe hear some life experience of some people who are facing some difficulties, like who have seen their friends who are visually impaired, who have seen their friends who don't who are unable to read, like Instagram post, maybe unable to understand movies, unable to understand a series which is on Netflix or whatever platform. There are few options available on these platforms which we can opt and understand those things. But as I said, people are not aware. So this campaign is all about awareing people about social media accessibility, how to make a post accessible, right? So as we all know, communication is a big part of our life. Communication is an important human right, and social media has become an intensive part of our life. And we all know it's important that communication and information is available to all users, so every users can enjoy its potential. But unfortunately, we are not using these basic tools which are available on these platforms to make every social media post accessible. Even some studies have shown that content is not available to different section of people, people with low vision, people who is completely uh, who is completely going through blindness. He can't access those content. So there are few tips nowadays which are available on the platform. If I will get into that later on, but I'm just giving you a brief introduction. What is this campaign about? What we are doing here? And because different people have like different need call for different solutions. Like persons with blindness listens to what is on screen. Elderly people who cannot read small prints, may we have to increase those font sizes to those people so they can read properly. Person who is hard of hearing can rely on captions. Some users may not be able to use mouse, but they can use keyboard. We have those short methods of doing the arrow, going up and down, using the keyboard as a mouse. So these were those small basic examples. And so in this session we will learn about digital accessibility, on how you can read or see a content, how know how you can make your posts accessible, learn how to make your photos, videos enjoyable to all. And we will list some resources also, because we have in this campaign we have created this a new website called Social Media Accessibility under Meta, which is supported by Meta. So we have created this pointer list on those on that website. So I will share that link after the session is over, and you can read those different pointers which are available there. And in this campaign recently, we were doing like different sessions. I mean, we were doing these different events. These events were online events, some offline events. And under this social media accessibility campaign, we have recently also launched accessible post competition on our platform. So in this platform, I think Khushi is here. Let me just check. She is the winner of that post accessible post contest, because she has to leave early. So she asked me that she can join me at 11:15. Khushi, are you here? Yes, yes, I'm here. Yeah, Khushi, can you just give me a small brief, because I know you have to leave early. So I'm just squeezing you in right now. Maybe you can just give me your 5 minutes and explain how have you created that post. And maybe Elfie, can you play Khushi's post on the background also, so everyone can see? Khushi, you can start.
technology is playing a vital role in tearing down barriers, and artificial intelligence is making real inroads into improving accessibility of technology for everyone. Here are a few examples of how smart technology can be a game changer, allowing visually impaired to interact with the world in new ways. Audible provides a wide selection of audible books, including recent popular titles, classics, and academic texts. Be My Eyes. Be My Eyes is an app that connects visually impaired people with sighted volunteers who provide visual assistance through a live video call. Be My Eyes is available in 180 languages. Smart Braille. Smart Braille allows Android users to communicate via an app version of Braille. Smart Braille features two majors. One that allows user to write text in Braille and the other that allows them to translate text into Braille. So let's work together to create a more inclusive online community. Thank you. So I just need to announce that Khushi is our winner of this contest. I know I have to do this at the end of the section, but Khushi has to leave, so that's why I'm now announcing it right now. Khushi, can you just please speak for 5 minutes and you can leave after that? Hello, Khushi, I'm आवाज audible. हाँ जी, please, yeah. First of all, thank you so much to the Saksham team. It's my pleasure to be here and, of course, to giving me this opportunity so that I can showcase my work, and of course I can contribute to the people around me. So thank you so much, and have a great day, everyone. Thank you, Khushi. I know you have to leave. That's why you were in a hurry, right? It's okay. It's okay. Yeah, it's thank you so much just giving us your 5 minutes. Uh, if you I'm want to really stay, you can. glad. Okay. हाँ जी, yeah, ma'am. No, no. I'm sorry. Right. Thanks, Khushi. Thank you so much. I'm glad. Thank you. Yeah, so just let's get back into the topic. So yeah, so let's go just deep down in the topic right now, and let's discuss basic tips to post content. What are the basic tips that we are discussing here? How we are making every post accessible? So the first pointer is use simple language. Whenever possible, use simple language and shorter sentences. Longer sentences are hard to follow and understand. Use sentence case instead of all cap. So this is our first tip to make social media accessible कि आपको स्मॉल सेंटेंस यूज करना है आपको और सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है अगर आप लॉन्ग सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है इसमें और सेंटेंस केस यूज करना है इंस्टेड ऑफ ऑल कैप्स मैं एग्जांपल देता हूं इसके लिए आपको जैसे आप लिख रहे हो हैशटैग मेक कंटेंट एक्सेसिबल इसको अगर आप ऑल कैप्स में लिख रहे हो आप तो जो स्क्रीन रीडर है जो भी वीआई पर्सन स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है वो इस सेंटेंस को हैशटैग मेक कंटेंट एक्सेसिबल उसको वन गो में रीड करेगा वो उसको इन मेरा कहने का ये मतलब है अगर आप इन सबको ऑल कैप्स में लिख रहे हो MAKE ये ऑल कैप्स में लिखा है अगर आपने तो जो स्क्रीन रीडर है वो उसको एज अ वन वर्ड लेगा इसके इसके बजाय आप इसको हैशटैग मेक का M कंटेंट का C और एक्सेसिबल का A इसको अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो स्क्रीन रीडर प्रॉपरली रीड करेगा इसको तो ये बहुत ही छोटा सा और बेसिक टिप है जिसको लोग फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे जब हैशटैग क्रिएट करते हैं ट्विटर पे फेसबुक पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ये बहुत ही बेसिक टिप है
जिसकी वजह जो सोशल मीडिया पोस्ट को एक्सेसिबल बना सकता है। और यहीं पे सेकंड पॉइंट ये आता है, इमोजीज यूज करना। अगर आप सबको याद होगा तो कुछ साल पहले, तब इमोजीज इमोजीज इतने पॉपुलर नहीं थे, तो हम लोग इमोटिकॉन्स यूज करते थे। इमोटिकॉन्स इन अ सेंस जिसमें हम कॉलन, दो कॉलन लगा के ब्रैकेट लगाते थे, और सिस्टम उसको अपने आप ही स्माइली फेस करके पढ़ता था उसको। तो क्या होता है इसमें, अगर हम ये यूज करते हैं, जो स्क्रीन रीडर होता है वो इसको एज अ कॉलन और ब्रैकेट ही पढ़ता है, वो उसको स्माइली फेस नहीं पढ़ता। तो इसलिए अगर कभी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप नोटिस करते हो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है इमोटिकॉन्स, फेसबुक में ऑलरेडी मेंशन है इमोजीज, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेंशन है, ट्विटर पे भी मेंशन है। तो अगर हम उसमें से चूज करेंगे तो स्क्रीन रीडर उस इमोजी को डिस्क्राइब करके पढ़ेगा, क्योंकि हर इमोजी का खुद का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे अगर सैड इमोजी लगाया है आपने, तो उसको स्क्रीन रीडर एज अ सैड इमोजी ही पढ़ेगा, बिकॉज उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इनबिल्ड है। और स्क्रीन रीडर को पढ़ सको एक्सेसिबल बनाने के लिए कि आपको इमोजीज यूज करने हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट को लेकर। कलर कॉन्ट्रास्ट ये होता है कि हमें मिनिमम 3:1 का रेशियो रखना होता है बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड। और आप हमें अवॉइड करना होता है टेक्स्ट को लिखना बिजी बैकग्राउंड पे। जैसे कोई बहुत कलरफुल बैकग्राउंड है, उसके ऊपर अगर हमने टेक्स्ट लिख दिया अगर, तो उसके लिखने की वजह से भी जो जो डिसेबल पर्सन है उसको इशू क्रिएट होगा उसको पढ़ने में। इवन जो स्क्रीन रीडर होगा वो भी थोड़ा इशू करेगा, वो पढ़ के ठीक से बता नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली उस बैकग्राउंड पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट हियर, इट टू यूज एनिमेटेड जिफ। तो जिफ में यूजुअली क्या होता है कि जितने भी ब्लिंकिंग और फ्लैशिंग वाले जिफ्ट होते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप फ्लिकरिंग कंटेंट यूज करते हो तो जिन लोगों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है उनको उससे सीजर्स भी आ सकते हैं। ये एक रीजन होता है कि हम जिफ को, एनिमेटेड जिफ को, जो लाइट होते हैं काफी स्मूथ, इनका ट्रांजिशन होता है, वो वाला यूज करें। एंड वी हैव टू इनेबल जिफ आर नॉट फ्लैश मोर देन 3 टाइम्स इन अ सेकेंड। 3 बार से 1 सेकेंड के ज्यादा वो ब्लिंक ना करे, फ्लैश ना करे। दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। अब हम सीधा जाते हैं फोटोज को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे। बिकॉज हम सब क्या करते हैं, हम सब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहला थॉट क्या होता है, खाने की फोटो लेके हम सीधा इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सीधा फेसबुक पे डालते हैं हम लोग। बट जब भी हम वो फोटो शेयर करते हैं, हम अपना कंटेंट तो लिख देते हैं दैट ओ माई गॉड आई एम हैविंग दिस मील ऑन दिस फैंसी रेस्टोरेंट। बट हम उस फोटो में कभी भी ऑल टेक्स्ट नहीं लगाते। तो ऑल टेक्स्ट लगाने का रीजन क्या होता है, अगर आप फोटो में ऑल टेक्स्ट नहीं लगाओगे तो जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो समझ नहीं पाएगा कि इस फोटो में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मॉन्यूमेंट के आगे खड़ा हूँ, लेट्स से मैं ताजमहल के आगे खड़ा हुआ हूँ मैं, एंड मेरे बैकग्राउंड में ताजमहल है, मैंने फोटो लगा दिया और लिख दिया हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन आगरा, और मैंने मेरी पोस्ट में टैग कर रखा है ताजमहल को, बट मैंने फोटो को डिस्क्राइब नहीं किया ऑल टेक्स्ट लगा के। तो अब क्या होगा, जो स्क्रीन रीडर होगा मेरा कंटेंट तो पढ़ लेगा दैट आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम, बट फोटो में हो क्या रहा है, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट है, वो हमें बताना होता है। तो इसके लिए अब, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर से या फिर 2021 से ही फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन लोगों ने अपने, जब भी हम फोटो अपलोड करते हैं वहां पे एक सेक्शन आता है ऑल टेक्स्ट का। आप उस पर जाकर क्लिक करोगे अगर, एक सिस्टम जनरेटेड ऑल टेक्स्ट लेता है वो। जैसे सिस्टम खुद जनरेट कर देगा उस फोटो के अकॉर्डिंगली एक ऑल टेक्स्ट, या फिर आप खुद का एक कस्टम मेड ऑल टेक्स्ट लिख सकते हो वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ताजमहल के आगे, मैंने सिस्टम पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द लाइक ऑटो जनरेटेड ऑल टेक्स्ट, तो सिस्टम ने जनरेट कर दिया अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मॉन्यूमेंट। बट क्या होता है, अगर हम सिस्टम जनरेटेड यूज करते हैं, इसमें भी एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि वो एग्जैक्टली exactly नहीं बताएगा कि वो मॉन्यूमेंट क्या है, वो पर्सन कौन खड़ा है आगे, बैकग्राउंड में क्या है, मतलब इज इट सनलाइट, इज इट नाइट टाइम, व्हाट इज हैपनिंग, सिस्टम वो नहीं बताएगा।
So the basic recommendation here is to generate and custom made alt text. आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मैंने फोटो डाला अपना, मैंने alt text में mention किया, I am standing in front of Taj Mahal. I am sitting on a bench, and you can see in the background Taj Mahal is in my left hand corner, and you can see the sky is blue. It's a sunny day, and you can also see a water fountain in the back of the image. So this is how you put alt text in an image. You have to describe every single thing, whatever is happening in the photo by the means of alt text. So ये जो alt text है, ये Facebook, Insta, Twitter, even LinkedIn, uh, पर माई नॉलेज आई थिंक अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये फीचर अवेलेबल है. बस ड्रॉबैक ये है कि लोग यूज नहीं करते हैं इसको. पीपल आर नॉट अवेयर कि ऑल टेक्स्ट प्रेजेंट है यहाँ पे. या आई एम सॉरी, समवन से समथिंग. Yes, Priya has raised her hand. Hello. Priya and Pranam, Leona. sir. Pranam, Yeah. sir. Sir, I'm from Salvan. Sir, your presentation is not visible. Okay, do you want me to show the presentation? Yes, sir. It will be helpful Yeah. for our all teachers. Yeah. Can you see it? Yes, sir. Now it's visible, sir. Thank you. All right. All right. Leona, do you want to ask something? Yes, sir. Yeah. I was hoping we could get an example of how to use alt text in a written form so that Sure. we can Yeah. actually Just give me a moment. see how it Yes. works. So as you can see here, यहाँ पे हम फोटो अपलोड करते हैं, राइट? यहाँ पे हमने फोटो पे क्लिक किया and we are I choosing. can only see the presentation on screen, sir. Yeah, let me just give the access. Just give me a moment, yeah. Sure, sure. Yes. Can you see now? Yes, I can. Yes. So as you can see, Facebook पे जैसे हमने फोटो पे क्लिक किया यहाँ पे, and we are adding a photo here. Okay. Let's say what I have. I have too many things, random things here. What should I choose? Maybe let's choose this one. Okay. Yeah, you can see the pain sir, Rami ma'am is here, and we have this Guruji. I don't know his name. I'm so sorry, I forgot his name. Uh, so you can see there's an option here, edit, right? If you can click Yes. on edit, here is an alternate text, right? Alt text. Okay. And you can see it has already auto-generated. Maybe an image of 3%. This is an auto-generated text. Yeah. And here in custom text, you can write. Custom. You can write Yes. maybe depends Rami ma'am and Rami are uh, presenting laptop presenting a laptop to Mr. So and so. I don't know the guru's name. I'm so sorry. Mr. Guru, and they are facing the camera. They are facing the camera with big smiles, right? Yes. And maybe you can also add the image. You can see in the background, you can see some flowers going there. There's a bright light. You can also add this. So this will for a VI person, these description will help him to understand the image even more, right? If you are choosing an auto-generated text, the Certainly. auto-generated text will only say that 4 people are standing in this image. They are exchanging gift.
but you have to describe it even more so that the visually impaired person can understand more. So this is a very like a very small thing, and but a very like a rare thing people don't use. So this is the campaign that we are trying to run with Facebook to aware people that every option is available on the platform, but people are not using it, right? Yes, this is a very useful Yeah, thing. Thank you, sir. yeah. Thank you so much, Leona. So how to Sir, if write better? Yeah, yeah. yeah, good morning, sir. My Good question morning. is this: as you said, we can when we are sharing the pic on WhatsApp also. So how Hmm. to add auto text there also? Can you show that also? Can you explain it Yes. again? So Yeah. in WhatsApp, there is no alt text option available right now. But Okay. if we can, let's say, I am posting this image here. Let's say the same image. Okay. So you have to type here, type the message. Can you see this? Type a message. Just give me a moment. Let me. So these are caption in WhatsApp. There is no alt text available right now, but we can put the caption with the image. If I'm explain this image more further in the caption only. Did you get my point? Hello. Hello. Okay. All right. Hello. Yes. Was this Yeah. Yeah. Hi. Sorry, this is Prashant here. Isaiah's father from Saksham. right? Actually, it's very heartening to see that something like this has been alt text has been used in on social media platform like Facebook, because I've been associated with generating alt text for textbooks for for K-12 and higher education books, Right. wherein we described photographs, pictures, images, Hmm. diagrams, Hmm. and other graphic material for the visually impaired students. Right. So I just wanted to thank the initiative, because it will really allow the students to actually interact more Yeah. on a more Exactly. Hmm. Hmm. lively basis. So I just wanted to thank that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So let's just move with this. Let's just move on with the topic: how to write better alt text. What are the tips of writing better alt text? So write alt text if you are describing an image to someone. For example, walking through the park with my dog. Like you can see here, there's a woman here walking with her dog, right? But people obviously they will post this image as it is, they will not describe it. So we can describe it. I'm wearing this fur jacket. I am walking my dog into the in the park. You can see like there's a autumn season going on. You can see the the birds flying in the background. There's a tree which is there's a tree behind me, and you can see also flower. So these are the basic tips. You have to describe each and single element of that photo in an alt text, right? But you also need to keep this in mind: the alt text should be descriptive. It should be in 125 character or less. The reason behind is because if you are writing too much, like there's too much description in an image, the person obviously, VI person, I understand. Because I'm a sighted person, so I can't completely relate to that feeling. But if you are writing too much, if we are reading too much, I think that can be sometime be annoying. Sometime that can be like, oh my God, बहुत लिखा है मैं नहीं पढ़ रहा. Let's just leave it there. So that there's a limit also. आपको 125 कैरेक्टर से ही कम रखो आप, बट उसको डिस्क्रिप्टिव रखो. डिस्क्रिप्टिव मतलब बेसिक पॉइंट एक्सप्लेन करो उसमें. आई कैन सी नीरू हैंड्स. नीरू, Neeru, do you want to say something?
No, sir. Sorry. All right, it's okay. बराती सुमकरा बराती, आपको कुछ कहना है? Hi, sir. Hello, sir. हाय Good हाय, afternoon. गुड आफ्टरनून. First of all, thanks a lot, sir, for this webinar. And I have a query, sir. Like during the यस. introductory part, you said that the sentence, whatever we write, it has to be in a caps lock. So now in like whatever we are describing in a chat box on this social media and all that, so every letter of the word has to be in a caps lock during that alt text also. No. Let me just give you an example. Yeah. Can you see my? You Thank can see the screen, right? Yeah, there is a presentation Huh. going on. Yeah. 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 So you can see use of hashtag. So I was talking about basically hashtag, how to use an hashtag. Okay, sir. Okay. So can you see Okay. this? Yeah, So yeah, yeah. this I thing, can see it, sir. Yeah. hashtag social accessibility. So Yeah. social accessibility आप देख रहे हो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? हाँ जी, right. हैशटैग सोशल एक्सेसिबिलिटी. अब क्या होगा, जो वीआई पर्सन है वो जब Yeah. स्क्रीन रीडर से इसको पढ़ेगा, राइट, तो वो Yeah. जो स्क्रीन रीडर होगा सोशल एक्सेसिबिलिटी को एज अ वन वर्ड पढ़ेगा. वो Oh, okay. सोशल और एक्सेसिबिलिटी दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. और डिफरेंशिएट कब करेगा वो, जब आप सोशल का एस और एक्सेसिबिलिटी का ए कैपिटल में लिखोगे, तब जो स्क्रीन रीडर होगा वो हैशटैग सोशल एक्सेसिबिलिटी ऐसे प्रोनाउंस करेगा, वरना हैशटैग सोशल एक्सेसिबिलिटी ऐसे बोलेगा वो. तो आई नो Oh, इट्स okay. वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यू आर अ साइटेड पर्सन, राइट? Yeah, right, sir. Right. हाँ, Yeah. तो एक्चुअली हमारे लिए इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हम देख के बता सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बट ये छोटी सी चीज अगर मिस होती है, तो जो भी वीआई लोग है या लो विजन वाला पर्सन है, उसको डिफिकल्टी होती है चीज समझने में. Okay, sir. तो रीजन Okay. ये था जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था. अभी मैं इसमें डीपली जाऊंगा अंदर में. वो तो मैंने ऐसे ही ब्रीफ बताया था, इंट्रोड्यूस किया था मैं टॉपिक को बस मैंने. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much. ऑलराइट, थैंक यू. सो लेट्स, मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया है. इसके बाद हाउ हाउ टू एडिट ऑल टेक्स्ट ऑन फेसबुक. एंड सो अगेन, जब आपने कोई इमेज डाला है, आपने आपने ऑल टेक्स्ट डालना भूल गया और आपने इमेज ही डाल दिया, फिर आपको थोड़ी देर बाद याद आया कि ओ माय गॉड, मैंने तो ऑल टेक्स्ट डाला ही नहीं है. तो उसमें भी कुछ नहीं करना. उसमें वापस इमेज में जाओ, सेम वहां पे जाके एडिट पे क्लिक करोगे आप. एडिट में अगेन आपको ऑप्शन दिख जाएगा वापस. जैसे मैं इधर जाता हूं, मैं यहाँ पे दिख रहा है सबको, चेंज ऑल टेक्स्ट लिखा आ रहा है यहाँ पे. तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये रहा ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है इमेज का. इमेज ऑफ आंचल शर्मा, आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट, full bright scholar at MIT, who shared the table with PM Modi and US First Lady Jill Biden during an interactive session at National Science Foundation. Yeah, Leona, I can see the hand. Just give me a moment. Yes, yes. Yeah, Leona. Sir, I tried doing this on my mobile phone, tried to upload a Mhm. photo to Facebook. And when I click on edit, it actually starts writing on the picture itself. Doesn't give the option for all text. So is it only applicable to laptops? No, it is there. Can you see those three dots? Yeah, I can see, like I can Ah. edit and I can go back to it, but it starts Mhm. writing on the picture. So I was a little like confused. On the picture. Yeah, it's writing on the picture when I'm trying to upload a picture to Facebook from my mobile. Okay, because I have my mobile in my hand and I have uploaded an image here. And Okay. if you can see those three dots on the right hand corner, Yes. if you click on those three dots, there are two options: remove photo, Yeah. edit all text. Edit. Yeah. Okay. Okay. आप edit पे click करो आप, Mm-hmm. उसमें लिख दो कुछ भी आपको लिखना है इमेज के बारे में, फिर डन कर दो उसको, हो गया. Okay, sir. Yeah. Yeah. Okay. All Thank right, you. all right. Yeah, Okay, thanks. no worries. या सो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि इस इमेज को अगर आपने गलती से पोस्ट कर दिया है और आप ऑल टेक्स्ट डालना भूल गए हो,
Again, don't need to worry. Just click on the image, go to these three dots here, go to change all text, and do it. Write whatever is there. Simple as that. एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज है. इंस्टाग्राम पे भी आप फोटो डालोगे, उसमें भी ये थ्री डॉट्स आते हैं. वहां पे जाके आप एडिट इमेज में जाओगे, टॉप राइट कॉर्नर में एंड्रॉइड फोन में एडवांस सेटिंग आएगी, वहां पे लिखा आएगा ऑल टेक्स्ट डालना. एग्जैक्टली आप वहां पे भी एक सेम चीज कर सकते हो. It's very simple to write these things, to write all text, but the only thing is people are not doing it. People are not doing it. People think it's a waste of time. They think कि यार इतना क्या क्यों लिखूं मैं, सिंपली मैंने पोस्ट कर दिया, जिसको देखना है वो देख लेगा. But this whole campaign is all about inclusiveness. We are trying to include as many as people as possible in our post, in our content. एंड रीजन क्या है इसका? रीजन सिंपली ये है बिकॉज आजकल के वर्ल्ड में एवरी न्यूज, एवरी आर्टिकल, एवरी ब्रॉडकास्ट, एवरी लाइक एंटरटेनमेंट न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, पॉलिटिक्स, कोई भी टॉपिक उठा लो आप, सब आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे मिल रहा है आपको पहली अपडेट. इवन रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, लिटरली अर्थक्वेक के 1 सेकंड बाद ही वो पोस्ट ट्विटर पे आ गई. वो कैसे आती है वो? बिकॉज पीपल आर सिटिंग देयर, पीपल आर डूइंग दोज थिंग्स. बट लोग अगेन ऑल टेक्स्ट नहीं डालते, वो लिखते नहीं है ठीक से, डिस्क्राइब नहीं करते. हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट द ओनली थिंग इज वी आर नॉट यूजिंग दोज टूल्स प्रॉपरली. सो ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज improving accessibility of videos. अब वीडियोस को एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए? इट्स वेरी सिंपल. आपको वीडियोस में ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है. आपको जैसे आप कोई भी वीडियो ऑन करते हो यूट्यूब में, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं. मैं यहाँ पे जैसे मैं ये सक्षम के यूट्यूब चैनल पे गया मैं, एंड यू कैन सी देयर आर डिफरेंट वीडियोस हियर. लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो एक टेस्टिमोनियल है यूजर की, जो यहाँ पे डिवाइसेस खरीदने आते हैं. ये उनका हमने टेस्टिमोनियल बनाया था हम लोगों ने. मैं ये दिखाना चाहूंगा आप सबको. 1 मिनट का वीडियो है ये. ओके, द वॉइस इज नॉट. सारा कुछ सेमिनार. या कैन यू हियर द वॉइस नाउ? मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में ये सहायक प्राध्यापक हूँ. और हाँ, मैं फेसबुक यूज करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ. लेकिन फेसबुक का यूज करते समय काफी दिक्कत आती है. एक तो बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं. पोस्ट लोग भेजते हैं तो इमेज है, मतलब जैसे बहुत बार किसी का नाम आता बोलता है कि इन्होंने पेस्ट भेजा है, इन्होंने एक पिक्चर भेजी है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन जो उसका वर्णन है ना, वो नहीं मतलब हो पाता है. और इसी तरह से बहुत सारा कुछ सेमिनार होता है, जैसे यूट्यूब वगैरह की तरफ, फेसबुक पर भी कितने सारे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो उसका जब इमेज या पोस्टर जो भी आता है ना, तो वो हम लोग को पता नहीं चल पाता है और वो पढ़ नहीं पाता है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है. तो इसको और मतलब फ्रेंडली बनाया जाए तो अच्छा. राइट. सो सबने ये वीडियो देखा, आपने नोटिस किया होगा इसमें एक येलो टेक्स्ट लिखा आ रहा है नीचे. इस वीडियो में एक येलो टेक्स्ट लिखा आ रहा है. तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एन ट्रांसक्रिप्ट, वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट. जो ये बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं हमने यहाँ पे. ये इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वट एवर लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहो उसमें लिख सकते हो. इससे क्या होता है? इससे ऑब्वियसली आई एम सॉरी, इससे ये होगा कि जो जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को जो कंप्लीटली डेफ है, या जिनको हार्ड ऑफ हेयरिंग का इशू है, वो क्या होगा, वो वीडियो पढ़ के समझ सकते हैं ये बंदा, ये पर्सन जो है, ये क्या बोल रहा है वीडियो.
तो इसलिए हम ट्रांसक्रिप्ट डालते हैं वीडियोस में। इसको हम क्या कहते हैं, सब टाइटल्स भी बोलते हैं, कैप्शंस भी बोलते हैं और ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। और ये जो कैप्शनिंग टूल होता है, ये फेसबुक में भी अवेलेबल है, जहाँ पे ये ऑटो जनरेट कर सकता है एक ट्रांसक्रिप्ट को। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पे, तो जैसे हमने ऑल टेक्स्ट में ऑप्शन देखा था, वहां पे ऑल टेक्स्ट में भी ये ऑटो जनरेट कर रहा था। अगेन कैप्शनिंग में भी ये ऑटो जनरेट करता है, वीडियो में जो भी लिखा आ रहा है, जो भी बोल रहा है, वो उसको ऑटो जनरेट करता है। लेकिन फेसबुक में अगेन एक ड्रॉबैक ये है कि ये अभी मेजरली इंग्लिश और हिंदी में भी, अगर आप क्लियर हिंदी बोल रहे हो तो उसको ऑटो जनरेट करेगा। यूजली इंग्लिश ही जनरेट करता है ये। तो यहाँ पे एक फेसबुक का भी ड्रॉबैक है कि इन लोगों ने इतना इंक्लूसिव नहीं बनाया है, कि इन्होंने इंडिया में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें इतनी रीजनल लैंग्वेज नहीं डाली है। इन लोगों ने इंग्लिश को प्रायोरिटी दी है। तो ये भी एक हमारा एक पॉइंटर है। जब हमने कैंपेन लिया था मेटा के साथ, तो हमने ये भी उनको पॉइंटर बोला था कि आप लोग तो यार अपने वीडियोस में इंग्लिश ही डालते हो, आप कभी भी आप और हिंदी लैंग्वेज यूज ही नहीं करते आप। तो इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। हम इसलिए हम हम चाह रहे थे कि जितने भी लोग अवेयर हो, जिससे हमें, अगर हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ पीपल आएंगे, सिग्नेचर्स आएंगे, या ज्यादा लोग हमें फीडबैक देंगे, तो हम उसका रिपोर्ट बना के फेसबुक को भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि यार सब लोग चाह रहे हैं कि आप ये वाला रीजनल लैंग्वेज डालो इसमें, ताकि ऑटो कैप्शनिंग से वीडियो में जो कैप्शन लिखा आ रहा है वो अपने आप ही जनरेट हो जाए। क्योंकि कभी कभार वीडियो 10 मिनट का होता है, कभी 15 मिनट का वीडियो होता है। तो ऑटो जनरेशन से क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक कस्टम मेड करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बस एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है एक डेफ पर्सन के लिए, और जो हार्ड ऑफ हेयरिंग वाले लोग हैं उनके लिए इसमें बहुत फायदा है इसमें, ऑटो कैप्शन का। एंड अगर आप चाहो तो मैं सबको एग्जांपल फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे अगेन मैं फेसबुक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे गए, ऐड फोटोज एंड वीडियोस के ऑप्शन में गए हम लोग, एंड लेट्स से आई हैव पुट दिस पुट अ वीडियो हेयर, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो ऑप्शंस का। आपने यहाँ पे क्लिक किया, वीडियो टाइटल 1 2 3 ठीक है डाल दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड कैप्शन। यहाँ पे सबको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड ऑटो जनरेटेड कैप्शन, ये इनेबल्ड है। और ये जो वीडियो है वो इंग्लिश में है। इसका मतलब क्या है, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक में, तो अपने आप ही ऑटो जनरेटेड कैप्शन आएगा इस वीडियो में। और अगर आप नीचे देख सको, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड कैप्शन। इसका मतलब ये है, आपने कोई वर्ड फाइल बनाई, एसआरवी फाइल बनाई, उसमें आपने वो डायलॉग्स टाइप कर दिए, फिर उस डायलॉग को यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ये हो गया कस्टम जनरेटेड कैप्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम ऑल टेक्स्ट में देखा था, उसमें भी ऑटो जनरेटेड ऑल टेक्स्ट था और कस्टम जनरेटेड। सेम एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड कैप्शन अवेलेबल है। इसको बस आपको ध्यान रखना है, ये इनेबल्ड रहे हमेशा। जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हो ये इनेबल्ड रहे। जिस उसके बाद क्या होगा, जो आपका वीडियो होगा वो मोर इंक्लूसिव हो जाएगा, और लोग देख पाएंगे उस वीडियो। सो अगेन ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक ऑप्शन है जो फेसबुक देता है हमें। देन देन मैं इसके बाद जाता हूँ फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव इट्स अगेन द सेम थिंग। जब आप फेसबुक लाइव चला रहे हो, वहां पे भी आप सेम सेम ऑप्शन में जाओ, सेम ऑप्शन चूज करो। याद रखो ऑटो जनरेटेड कैप्शन जो है वो ऑन होना चाहिए। अगेन इंस्टा में भी सेम चीज है, ट्विटर में भी सेम चीज है, हर जगह सेम चीज है। इट्स ऑल अबाउट यू नो गोइंग आउट एंड डूइंग दैट। लेजीनेस के चक्कर में लोग करते नहीं है। ये एक्चुअली फीडबैक आया है मेरे पास कि ये सर, मैं तो मन नहीं करता, इतना फोटो डाली है मैंने, अब मैं क्या 10 मिनट लूं उसमें लिखने के लिए मैं। तो ये एक फीडबैक आता है मेरे पास कि सर मैं तो नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे को जो बताना था वीडियो से बता दिया है मैंने लिखूंगा। तो दिस इज actually a very wrong thing. People are just very casual in doing these things. But मुझे personally feel होता है कि if you want to make your content accessible, inclusive to everyone, then you have to use these options जो मैंने आपको लिस्ट की है। तो मैं अभी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं, एंड कोई भी अगर क्वेश्चंस है किसी के पास तो प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जरा स्क्रीन भी स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
If you have any question, just please do let me know. And our session was from 11 to 11:45. It's 11:53 right now. So let's just close it at 12. Yes, Deepak, I have unmuted you. Rehan sir, so far session was very Yes. spectacularly well and new but I don't like all text और जो आपने ट्रांसक्रिप्ट बोला था वो है दो क्वेश्चन है थोड़ा सा पाथ ब्रेकिंग है या स्टूपिड क्वेश्चन भी हो सकते हैं डू यू हैव सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ एआई टूल टू मेक दिस सोशल accessibility more powerful tool? I'm sorry, can you repeat that? Sorry. Do you have any arrangement of AI tool to club with this social accessibility mechanism to make some more visibility Actually, to get into the maximum? Yeah. Yeah, to have an AI tool, it's like a costing thing. And to be really Okay. honest, we have to, I mean, it's my personal opinion that every company should have an AI tool built into their system. Like, क्योंकि आपको पता होगा HCL में काम करते हो आप, right? आपके खुद के इंटरनल Mm-hmm. सॉफ्टवेयर होते हैं आपके. तो आई एम नॉट श्योर कितना एक्सेसिबल है वो, बिकॉज एक्चुअली मैं भी HCL के साथ काम कर चुका हूँ. मैं 3 साल पहले मैंने भी काम किया HCL के साथ. मेरे को याद है Mm-hmm. एक्सेसिबल नहीं था वहां पे कुछ भी, जितना मेरे को अभी That तक याद है. very project to project depend on the costing that they're एग्जैक्टली including एग्जैक्टली. by बट हम through third क्या party करते tool हैं or जो whatever. Yeah. राइट, हम क्या करते हैं जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलरली Mm-hmm. हम एक प्रोजेक्ट में ही डिसेबल पर्सन या VI पर्सन या हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन, उसको हम एक Mm-hmm. कॉर्नर में या एक प्रोजेक्ट में लेते हैं हम लोग. और फिर उस प्रोजेक्ट को कहते हैं कि चलो दिस इज आवर एक्सेसिबल लाइक टीम और एक्सेसिबल थिंग दैट वी हैव इन आवर बिल्डिंग. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये. मैं यहाँ पे कुछ किसी को राय नहीं देने बैठा हुआ हूँ, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इंक्लूसिव environment, inclusive software or whatever, so Mm-hmm. you have to, in every team there has to be people working with different disabilities. उससे क्या होता है कि जैसे यार दिस इज, मैं और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको दीपक, बिकॉज दिस इज सक्षम इज माय फर्स्ट कंपनी इन विच आई Okay. एम वर्किंग विद डिसेबल पर्सन. मैंने इससे पहले कभी भी पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ काम नहीं किया है मैंने. और मुझसे काफी मेरे फ्रेंड्स ने बोला है मुझसे कि ये डूड, हाउ डू यू वर्क विद दीस पीपल, हाउ कैन यू, Mm-hmm. मतलब आप इंटरेक्ट कैसे करते हो, और ये लोग लैपटॉप कैसे यूज करते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं. मतलब उनके लिए था कि ओ माय गॉड, व्हाट व्हाट इज हैपनिंग. उनके लिए था ओ गॉड ये लोग कैसे काम करते हैं. बट मैं लिटरली फर्स्ट डे आया यहाँ पे, फर्स्ट डे मेरे को रियलाइज हुआ कि डूड आई एम नथिंग. Like, I am a sighted person, I can do different things, but the ability to do, like, the beyond things, वो शायद मेरे को सीखना होगा. बैक टू द टॉपिक, बैक टू, मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ यहाँ पे. यस, आई कंप्लीटली एग्री कि एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर AI का होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी हम अपने लैपटॉप में है सिस्टम हमारे पास, उसको और एक्सेसिबल बना सके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को पर्सनली ये फील होता है. Okay. एक या थोड़ा सा सवाल है कि let's suppose I am from disabilities criteria person and my core राइट, interest is child sex domain. So how can I ठीक है. promote this subject to get into to reach maximum audience of the same people? So what is the guidelines for me if I do post regarding the same only the exact matter like child sex education? So कोई guidelines है मेरे लिए या कोई So you वैसा are saying कि, algorithm? हाँ, यू आर सेइंग यू Yeah. आर अ VI पर्सन, आपको चाइल्ड सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना है आपको, राइट? पढ़ना है and also want to share to get maximum audience, to get maximum हम्म. audience visibility and to pass on हम्म. such legacy to maximum people so that they can also follow the same practice. So is there any specific guidelines for me or how can I proceed further? एक्चुअली यार ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है आपने. मैं एक्चुअली समिष्ठा मैम है यहाँ पे, मे बी शायद वो बता सके, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस. Okay. हाँ, बिकॉज अ वेरी टेक्निकल थिंग यू आर आस्किंग, आई डोंट वांट टू से समथिंग जो मैं गलत बोल दूं मैं. तो Maybe इसलिए open forum है ना. I don't think my question comes under any compliance and non-compliance, right? It's an open forum बिकॉज ना for each and everyone. I'm a program manager here. So Okay. आप एक टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा पूछ रहे हो मुझसे, आप पॉइंटर्स पूछ रहे हो, ठीक है? तो मैं ठीक है. पॉइंटर आपको नहीं दे पाऊंगा. बात ठीक ये है बस, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, राइट? सो आई कांट गिव यू दैट व्हाट यू आर आस्किंग.
If I don't know if Shamishta ma'am is here, Bipasha ma'am is also here. Maybe आप लोग contribute करना चाहें इस conversation में. Uh, I yeah, yeah, Shamishta ma'am, we yeah. can hear you. Deepak, I was disconnected. My network failed. So, what was your question? Can you just repeat it once more? The virtual question that let's suppose I'm confident that disabilities person and my core area is child sex education. I want to promote through more on this through my post so that we can get maximum audience and the maximum audience get inspired and they can follow the same legacy to get more audience. So is there any specific guideline for me or is a protocol or algorithm which I have to follow for my each and every post regarding the same domain? Okay. I have a thing. We should have a conversation on it separately, but not on this platform, and then we Okay. can explore it. Okay. But last but not least, Aryan sir, one more question. What are the potential Yeah. negative consequences of social media accessibility apart from cyberbullying or the other areas? Do you have some more deep dive points? So can you please put some light on this? I'm sorry, can you repeat that? Your voice was breaking out. What I are the couldn't. potential negative consequences of social media accessibility apart from cyberbullying and other agreed negative points? Do you have some extra point जहाँ पे हम लोग aware होना चाहिए in terms of Actually, you know what? I really don't have some negative points, but as you know, Meta is a very big company. मतलब negative points to be really honest, I don't have any negative points. But in general, जो यहाँ पे जैसे visitors आते हैं हमारे ऑफिस में, जो assistive devices खरीदते हैं यहाँ पे आके, तो मैं उनसे बातें करता हूँ बैठ के मैं उनसे. मेरा particular question उनसे हमेशा ये होता है कि आपको सोशल मीडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नेगेटिव फील होता है आपको सोशल मीडिया पे. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को अभी यहाँ पे कंपनी में 4 महीने हुए हैं मुझे अभी यहाँ पे आए हुए. मैंने अभी तक कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं सुना है मैंने कि सोशल मीडिया में किसी ने मेरे को हैक कर लिया या किसी ने okay पैसे निकाल लिए अकाउंट से या वॉट एवर, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिया मेरा. आज तक कभी किसी ने नहीं बोला. सब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं. वो ये कहते हैं कि हाँ, एक्सेसिबल और होना चाहिए. जो हमने फोटोज के बारे में डिस्कस किया कि ऑल टेक्स्ट नहीं डाल रहे हैं, कैप्शंस नहीं लगा रहे हैं, मे बी फोटोज में फ्लैशिंग बहुत हो रहा है फोटोज में, वो आंखों पे ब्लिंक कर रहा है काफी, हैशटैग के साथ कैप्स यूज नहीं किया, वो इशू क्रिएट हो रहा है. बट कभी भी किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे को किसी ने हैक कर लिया. अभी तक तो मेरे कांटेक्ट में लिटरली कोई आया नहीं है. एंड if because we are creating a report on this, and this topic was in my mind and I wanted to talk to more people about this. uh, Maybe we can connect sometime later, maybe in the starting of July, and we can discuss more about this because uh, एक एक था एक वेबसाइट डेवलपर है जो एक बार कंपनी में आया था. ही इज अ VI पर्सन है, बट ही इज अ वेबसाइट डेवलपर. तो मैंने उनसे बैठ के 2 घंटे बात करी बैठ के उनके. एंड अगेन उसने बोला सर आज तक ही वॉज 34 years old एंड ही सेड सर अभी तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरा प्रोफाइल हैक मारा हो. इवन मेरे दोस्तों का प्रोफाइल हैक किया है या बैंक डिटेल हैक हो गई है. अभी तक तो वो नेगेटिव पॉइंट काउंटर नहीं आया है. बट अगेन मेरे को लगता है ये ना एक डीप कॉन्वर्सेशन है. मे बी शायद हमने उन लोगों को अभी तक ढूंढा नहीं है या मिले नहीं है वो लोग अभी तक हमें. सो मैं इसके बारे में अभी यही बोल सकता हूँ मैं कि अभी तो कोई नेगेटिव पॉइंट right now I don't see any negative point about how if you are making anything accessible इसका कोई नेगेटिव होगा इम्पैक्ट कोई. So I don't see anything. ओके लास्ट क्वेश्चन. जो मेरे बच्चे हैं 20 बच्चे जो मैं जुलाई सेशन में लेने वाला हूँ, तो पोस्ट दिस सेशन are you gonna give some hard copy or some documentation because one session is not enough to Yeah. है ना? I totally So, understand. Yes, I will be. Because you all are here, so I will be asking everyone's email ID, and maybe I will share some soft copy, some word file with you, ताकि वो एक्सेसिबल रहे. अगर कोई VI पर्सन भी अवेलेबल है उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो. वो एक्सेसिबल रहेगा हर किसी के लिए. एंड आई विल बी शेयरिंग वेबसाइट लिंक ऑल्सो. एंड सक्षम ने कुछ वीडियोस बनाए हैं अबाउट सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी. ये वीडियोस इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे. मैं इनके भी लिंक शेयर करूंगा मैं.
And I really want everyone to go through these videos. जो हमने आज बात करी, इसको थोड़ा और briefly समझाया है हमने उन videos में. एंड अगर सब मेरे को 5 मिनट दें, एंड सब अगर चैट में अपना ईमेल आईडी डाल दो सब अगर, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, ताकि मैं आप सबको सॉफ्ट कॉपीज, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट भेज सकूं मैं आपको फॉर द फ्यूचर. आप उनको पढ़ सकते हो. इवन आई आई सजेस्ट आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, उनसे बात करिए, दिखाइए उनको. Because there are some VIP persons also who don't use alt text, who don't put captions in their images, who are just doing those things just for the sake of it. So यहाँ पे दोनों एंड में अवेयरनेस है. यहाँ पे सैटेलाइट लोग को अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए, बट वीआई पर्सन को भी अवेयरनेस चाहिए इस मैटर के ऊपर. So yes, I can see everyone are sending those email ID. So I just want to bring on Rolf is here. Rolf is also one of our winner of social media accessibility contest. Rahul, are you here? Rahul Siddiq. Yes. Rahul, can you come forward? Yes, yes. Okay. Rahul, मैंने unmute कर दिया है आपको, please. I'm sorry, it's not Rahul, it's Rauf. Hello. R-A-U-F. Hello. Am I audible? Right? Yes, you are. Yes. Sorry. Yeah. It's okay. Rolf, right? It's Rauf. Yeah. Raul. It's Rauf. It's very difficult to pronounce your name, yaar. Rolf, right? Yeah. It's Rauf. Rolf, can you please introduce yourself, because you are the winner of our social media accessibility campaign. You are just give me a small brief about yourself. Then we can play your video. Oh, okay. So I am Rauf Siddiq, and I hail from Kashmir. And currently I'm studying in University of Delhi. I'm enrolled in St. Stephen's College, and I have history and political science as my two disciplines. Yeah. Okay. भारती, आपका एक क्वेरी है, आपका मैसेज आया मेरे पास. Hello, sir. Yes. Yeah. Sorry to interrupt. Sir, okay. I just want to ask, like, our kids, they use talkback, right, sir? Right. And what like if they start using all this social media, Facebook, WhatsApp, whatever, but I'm talking about instant Facebook. तो मुझे ये पूछना है, जब भी like you have given a tips how to write the description about the image and everything, लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, उनके पास तो talk back ही है, but they have to do some setting in the language or what, like TTS speak something like that, or otherwise it start reading whatever has been described in the text box, or they have to do some extra settings to read the image description. आप रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इंडिया इंग्लिश और हिंदी के, किसकी बात कर रहे हो? India and English. I'm not talking about regional language. Actually वो रीड कर लेगा वो उसको. I'm sorry. Yeah. So जो भी स्क्रीन रीडर होगा वो उसको रीड करेगा वो उसको. अच्छा, कोई पीछे से हमें लैंग्वेज सेटिंग में जाके कुछ नहीं करना है हमारे बच्चों को. Talk back is more than enough. हाँ. Rolf, can you get into this? आप लोग को बता सकते हो थोड़ा डिटेल इस बारे में? जहाँ तक मुझे पता है एक सेटिंग ऑप्शन होता है वैसे. Sure, sir. Yeah. So, ma'am, we need to like so whatever TTS you are using, so you need to choose the language. Say you want to read English content, and say you are using ETI Eloquence TTS. So that is for like English and other Latin languages. So you need to set that language, and you need to, that's true. You need to go to the settings and
choose the language you want to set that TTS for, and like choose the voice as well, like what voice of that TTS you want to use. Say like in Google TTS there are various voices for Hindi. There is male 1, male 2, female 1, female 2, right? So we need to do that. Right. Thank you. Thank you so much. Bharti? Yeah, thank you, sir. Thank you so Right. much. I got All it. right. Yeah, thanks a lot. Right. So let's, we are about to close our session, and I just want to ask Elfie. Elfie, आप वो वीडियो प्ले करोगे रॉफ सिद्दीकी का वीडियो, because he's a VI person. Let me just inform everyone. He's a VI person, and he's the winner of this competition. No, not this. Hello, folks. This is Rauf here, and today I'll be demonstrating a very useful, multi-featured, a feature-rich application, I must say, which is called What do you want? Recent apps. Tech Freedom. Yep, you heard it right. It's Tech Freedom, and this application is available on Play Store as well. You can go and easily search for it. But since I was already having it, and I often use this application, and I've opened it recently also, so it was there in my recent menu, so I'll be opening it from there only. So double click on this application to open. Home screen. Let's see how does our phone screen look like when we open this application. But before that, I'd like to tell you that I told you earlier that it's a multi-featured app. It contains a lot of stuff, but we won't be talking about that much, all the features, right? So we'll be focusing on a few features, specifically the two features, the cache reader one and the image reader, right? And I'll tell you what are the other remaining features which are important, but we won't be talking about those features in detail, right? So let's see how does our screen look like when we open this application. So here we go. So on the top left corner of your phone screen, you'll find this option called Open Navigation Drawer, and underneath there's a music coming in the background. Elfie, can you stop the screen, sharing the screen? Thank you. Yes, so yes, everyone. So this is the end of our session. I'd like to thank you, everyone, to be here, to be on time. First of all, thank you so much. Everyone was on time, and yes, so we have, as I already announced, our two winners for our social media accessibility contest were Khushi and Rolf. So thank you so much, guys, for participating, and for as we all know, today is Hellen Keller Day. That's why we are here. I hope you all know about Hellen Keller. Helen Keller was born deaf and blind. She pers- she founded the American Foundation of Blind, and today we celebrate her. So that's why we are here. That's why we are here. We talked about social media accessibility, and I hope everyone has shared their email addresses on the chat box, because I will be sending some soft copies to everyone, a reading material to learn more about accessibility, and maybe share these thoughts with your friends and family. So thank you, everyone. If I'm just uh, unmuting everyone, if you have to say anything, just please, it's your last time to say it, because I'm closing the meeting. Excuse me, sir. I Yes. want to ask, like, if I am using NVDA, but I am taking anybody else's computer screen for work. So, what to do while using the screen reader for that also? Like, I'm using Busy, and I have to use this Busy app.
and I want the screen reader to work. So once I switch on to busy or any desk, the screen reader stops working. Okay. Rolf, can you explain that? See, I'm borrowing the screen of my partner, suppose, and I am having my screen reader on NVDA. But when I switch on to any desk or ultra viewer, then the screen reader stops working. Right. So what changes have I to make? Yeah. Rolf is here. Rolf, can you explain it, please? Yeah. I'm not sure, but I think the software you are talking about, is that compatible with our screen reader? I'm not sure about that. I think that that is not. I mean, that doesn't support. That's not Okay. accessible. Okay. So that I may think be the reason that I'm how not was being support? able to. Yeah, that could be. So what are the softwares that are compatible with the screen reader? Can you name some so that like when we have to borrow somebody else's screen to For, work? so for what like purpose you want to use that? You were using that software? Yes. Busy is a business software where you can punch the bills of any, like I am owning a shop and for all the vendors bills are with me, and at night suppose I want to punch all the bills, credit notes. So how can I access to it? I'm not on the shop, but I have borrowed the screen of my desktop. Even I'm not sure. Okay, I have Ultra Viewer, like you have heard about it. Ultra Viewer, no, one of my busy. No. Any yeah. desk. It is just like any desk. My brother is with me who works at Saksham only. So yeah, maybe he has something to say. Maybe yeah, you'll get your answer. Yeah, hi ma'am. Hi. As Rob told that the AnyDesk is no longer supported by the screen readers, as I already used. Okay. That you need to just use NVDA add-ons for the accessing the any other's computer screen. So, Okay. but the another person should also have the NVDA and that NVDA add-on called NVDA Remote. After that, you can use their PC and you can just use their any other PC remotely from your wherever. NVDA add-on, how can we go on the NVDA add-on from NVDA menu? You need to just search in Google. Sir, I would like to add in the same context. Yeah. Yeah, Leona. Yeah, if instead of any desk which is not supported by a screen reader anymore, if we are doing team viewer, let's say, how about like I am a visually impaired person who is trying to assist someone through team viewer. I may be That is so- what I was telling. Ultra Viewer is in Exactly. Team Viewer only, where Yeah. you can access. Team viewer, I'm not sure about the team viewer. I didn't use that team viewer. I think that is not also that much accessible. That much is that add-on, because that add-on is already with Excuse me. Does it mean that any time that a visually impaired person tries to assist another or take control of another computer, the screen reader is not accessible on the other computer, or it stops reading? No, it depends no, on ma'am. the. See, it depends on the software you are working with, right? So, say the two Actually, softwares you TeamTalk were is talking about. Team Viewer is accessible. We can use it with screen reader and help others. Uh,
You saying But something? Ultra Viewer is not accessible, I think. So Yeah, I yeah. have If that's tried not it with accessible, Ultra Viewer. I don't think remote access would be helpful either in that like condition, since it's not accessible, right? But uh, 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 usually, if you have to take control of the another system, so it's very good. It works really well. Um, but the condition for that is that the other person whose computer you are controlling should have that remote access add-on. Yeah, it works really well. I've Okay, so worked on. we should ask the other person to download NVDA and open it and then share the screen. Yeah, and then Yes. use that NVDA remote access add-on. You need to you need to connect that, and then yeah, it works. It works pretty well. In another meeting, if you share screen and explain us better, it would be very nice of you. Sure. We will do that. And let's And also, sorry to disturb you. And also, let us know what are the other means by which a visually impaired person can work online easily by accessing to other softwares also, so that we are able to train our kids for it. See, because online working is the easiest mode for them. right. Right. Roli ma'am, the thing is, if you can, give these questions to Shamishta ma'am, and maybe, she can coordinate and tell me these questions, whatever questions are there. So, I can arrange all of these answer and then maybe provide you a proper mail, proper drafting, whatever you need to know. That will Yeah, helpful. yeah. And yes, obviously, maybe we can plan for a, future meeting also, where we can discuss about different softwares only, how to use NVDA, what screen readers are the best, and what softwares are the best. That we Yeah. can do. In future, we can do that. But Since Bridge Ma'am is in meeting, I would like to yeah, address her and would like her to include this training also in Saksham for the kids right. as they are growing up for their vocational training, so that they can pick up with these kinds of projects in future. Sure, ma'am. Yes, definitely. Yes. Navya wants to say something. Navya and Hari Om. Yes, sir. Sir, not exactly a question, but I would Yeah. rather like to correct you actually on a statement you made. Quote unquote, Helen Keller was born blind and deaf. She was not born blind and deaf. She fell seriously ill at around 1.5 years of age, I suppose. That's how What? she became blind and deaf. She was not born blind and deaf. Yeah, but I think Yes, Google sir. then She's Google then sir, Google is she's lying to us, because Google sir, is she's saying she right. was Sir, she's right. Yeah, even if you search Google, it will say she was not right, born. right. Because I have read from And sir, Google only. That's why I've said that. uh, And thank you so much and for sir, correcting I me. just wanted to explain. Sir, I Hanji, just wanted yes. to explain. I just want to tell that TeamViewer is pretty much accessible with NVDA. I have used it personally. Hmm. Uh, if like the if you want to control anyone's computer with this software, then the other computer don't need a screen reader. Only you need a screen reader, and basically you have to just input the Okay. ID, TeamViewer ID and password, and then you can control it, no problem. But I just wanted to tell that only. Uh, ठीक है, and ठीक है. and you Thank can you, also thank. use remote, but for sighted, TeamViewer is, I think, more convenient than remote, because if we will use remote, then we need screen reader in both the computers. But if we will use the TeamViewer, then only one computer should have the screen reader. Okay, all right. Thank you, Ariom. Uh, okay, so everyone, I'm just closing the session. If you can all open your camera for 2 minutes, sorry, for 5 seconds, not 2 minutes, just for 5 seconds, that will be really helpful, because I just want to see everyone. And I know everyone is working. I mean, most people are working from home, I can see.
आरिहन Yes. मैं पुष्पा मडवाल सक्षम से ही हूँ, स्कूल से बोल रही हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जो आप कह रहे हो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर जॉइन फ्रॉम होम, वो हमारे सलमान स्कूल के टीचर्स हैं और मैं उनको थैंक यू कहूंगी कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे और सबने Right. ज्वाइन की। सो Exactly. हाँ, And on time also. on time also, yes, Yes. right. Because that is something really beautiful. That is something really beautiful. Yeah. Yeah. I would like to add, it was before time we joined the meeting. Yes, yes, ma'am. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you, everyone. Thank you. Have a nice day ahead. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you.